Hello students, welcome to Saurav's classes. मेरा नाम अश्मिता है and in today's class we are going to talk about the IIT JAM mathematics syllabus for the upcoming year. Now you should be knowing the latest updated syllabus for any kind of examination which you are going for or you are preparing for. So let us start discussing about the mathematics syllabus. Now the first section would depend upon this sequences and series of real numbers. Now from here what can you expect? You can expect questions from Bolzano-Weierstrass theorems, then Cauchy sequences, subsequences, absolute convergence, then series of real numbers, tests of convergence for series of positive terms, then comparison test, ratio test, root test, convergence of sequences, then convergence criteria for sequences of real numbers, then bounded and monotone sequences are there. Sequence of real numbers are there, then Leibniz test for convergence of alternating series. The next major topic or section would be from functions of one real variable. Now here you can get questions based on limit, intermediate value property, continuity, differentiation, Rolle's theorem, mean value theorem, Taylor's theorem, hospital rule, L'Hospital rule, maxima and minima. The next part would be from functions of 2 or 3 real variables. Here you can expect questions from limit, continuity, partial derivatives, then differentiability, maxima and minima. The next major topic from where you can expect question is the integral calculus. Now integration as an inverse process of differentiation, then definite integrals and their properties, then double and triple integrals, then calculating surface areas and volumes, then calculating surface areas and volumes using double integrals, then change of order of integration, then calculating volumes using triple integrals. The next section would be based on differential equations, and here you can expect questions based on orthogonal trajectories, then homogeneous differential equations, then linear differential equations of second order with constant coefficients, then variable separable equations, then method of variation of parameters, Cauchy-Euler equation, then ordinary differential equations of the first order of the form. There's this Bernoulli's equation based questions, then integrating factor, exact differential equations. There is this another section which is based on vector calculus, and here you can get questions based on scalar and vector fields, then divergence, gradient, curl, line integrals, Green, Stokes and Gauss theorems, then surface integrals. The next major section would be based on group theory, from where you can expect questions based on groups, subgroups, then non-abelian groups, abelian groups, then cyclic groups, permutation groups, normal subgroups, group homomorphisms and basic concepts of quotient groups, then Lagrange's theorem for finite groups. The next major section would be based on linear algebra, and it would be, now here you can expect questions based on matrix representation, then rank nullity theorem, rank and inverse of a matrix, then determinant, consistency conditions, solutions of systems of linear equations, Eugen values, then Eugen vectors for matrices, then finite dimensional vector spaces, then linear independence of vectors, basis, dimension and linear transformations, range space, null space, Cayley-Hamilton theorem. The next major section is based on real analysis, where you can expect questions based on interior points, closed sets, limit points, open sets, bounded sets, then there are connected sets questions, then compact sets, completeness of R power series, that is of real variable, radius and interval of convergence, then Taylor series, term-wise differentiation and integration of power series. So that was all about the mathematics syllabus of IIT JAM for the upcoming year entrance examination. तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन लेना है then you need the guidance of a better mentor and a better coach, और हम सौरभ क्लासेस में वही mentor वही कोच आपको प्रोवाइड करेंगे. हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस,
मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, देन लाइव क्लासेस तो हैं ही। अगर आपको हमारे क्लासेस में एनरोल करना है देन आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट लिंक है, सभी वहाँ पे दिया गया है। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना है या फिर एनरोल करना है तो आप हमारे क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अनसॉल्व पेपर्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, हमारे जो सॉल्व स्टडी मटेरियल्स है वो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है हमारे क्लासेस के बारे में देन डेफिनेटली यू कैन विजिट सौरभ क्लासेस वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड हमारे यहाँ पे हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो अगर आप हमारे यहाँ पे एनरोल भी करते हैं तो हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जो एक्चुअली लाइव लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम पोर्टल में हम अपलोड कर देते हैं, सो दैट अगर आपको बाद में भी कुछ डाउट्स होता है तो आप उन लेक्चर्स को जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्लासेस। एंड अगर आपको और भी जानना है देन यू कैन विजिट सौरभ क्लासेस वेबसाइट और you can definitely call us. So that was all about the IIT JAM entrance examination also. We are going to meet once again in our next classes with more such discussions.